Okay, am I audible, students? Hello. Yes, sir. Good My evening. voice is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. A very good evening to all of you. How are you? Good evening, sir. Fine, sir. Fine. Yes. Fine, So, anyone new in this session जो कल आप लोग नहीं actually present था class पे? Anyone new here? Those who are not presenting on the previous class. So I think you have the idea जो yesterday we have discussed. You have to give the presentation, right? Yes or no? We have already Yes, sir. discussed. So I'm starting from Akanksha Kochar. Akanksha, Yes, sir. start करो. Good evening, sir. Thank you for giving me. कैमरा ऑन करने आकांक्षा. अनम्यूट करो. Good evening, sir. Thank you for giving me opportunity. Thank you for giving me opportunity for the presentation. My topics are cyber security, ITL, troubleshooting. Thank you for giving me opportunity for introduction. My topics are cybersecurity, troubleshooting, ITL, networking. My name is Akansha Gochar. I have done Polytechnic Diploma from IT. After that, I have completed 1 year apprenticeship from SF. After that, I am interested in IT. My short term. Akanksha, Yes, sir. this is the introduction. I am asking you to give the presentation. Introduction part at the first day we have already completed. Presentation, that means which topic you have prepared. Yes, sir. हाँ, उसी टॉपिक के ऊपर ही बोलो. इंट्रोडक्शन तो हो गया कल. My topic is networking. अब बोलो. Networking, types of network, types of topologies, types of cables. अरे ये तो टॉपिक का नेम है. Yes, sir. टॉपिक के ऊपर तो डिस्कस करना है. कोई एक टॉपिक के ऊपर, आइदर नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, आइदर Okay. टोपोलॉजी, कोई एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो. 15 लाइंस. OSI model, presentation layer, network layer, session layer, transport layer, transport layer, session layer, network layer, session layer, application layer. After that. No, Akansha, Yes, sir. I think आप मेरा point, you are not getting my point. I just want to say you have to discuss elaborately with any topic, right? Either OSI layer, either topology, either types of network, Okay, right? sir. कोई एक UDP is connectionless and TCP is very fast. हाँ. No. आकांक्षा हमने फॉलो करो. आपका दोस्त लोग कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा. Okay. आदित्य मिश्रा फ्रॉम यूपी. आदित्य मिश्रा, स्टार्ट करो. Good evening, sir. Thank you for giving me कैमरा ऑन opportunity करो. to give कैमरा the ऑन करना, ये क्या अलग करके बोलना है? सब लोगों का तो सेम है. sir. Thank you for giving me opportunity to give the introduction in this meeting. My name is Aditya Mishra. I have done the BTech in अरे ऑल वेट 2014 from मैं the बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए इंट्रोडक्शन तो हो गया कल. इंट्रोडक्शन पहला दिन के yes लिए sir. हो गया कंप्लीट. अभी हर दिन प्रेजेंटेशन चलेगा. Yes, I have done the presentation on the topic of these IP addresses. हाँ. IP address, the IP address is a logical address which is uniquely identified device
in a network IP IPv6. IPv4 addresses signifies IT is hello. हाँ IT is a 32-bit address, and IT contains the 4 octet. 1 octet is equal to 8 bits, and dot is used to separate the octet from the other octet. It is a represented in the decimal format. For example, /192 actually the IPv4 represented in the dotted form, V6 in column form. It is also referred to as called the decimal address. Two types of IPv4 addresses. Number one, public IPv4, and second one, the private IPv4 address. It difference between the between the private and public IPv4. Private IPv4 address is free of cost, whereas the public IPv4 is the few or cost chargeable. Private IPv4 address is not allowed in the interface, whereas the public IPv4 address is global router. Private IPv4 address in 3 classes, whereas the private IPv4 is the 5 classes: Class C, Class B, Class C, Class C, Class D, Class E. And the ranges of public IPv4 address from Class A is 1 to 126, and Class B, which is also known, which is also loopback used for the state. And the Class B is 126 to the 121, and Class B is equal to 128 to the 191, and Class C is equal to 192 to the 223. Class D, the range of Class D is 224 to the 239, and range for Class C is equal to 249 to the 255. हाँ Yes, sir. ठीक है आदित्य, एक्चुअली क्या हो रहा है आपका, आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसलिए वीडियोस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज प्रेजेंटेशन Yes, का sir. जो स्टाइल जो लगा था मुझे अच्छा लगा था, ठीक है, हो जाएगा, वेरी गुड। Okay, thank you, sir. अच्छा Thank you. भीमसेन, आपको मैंने कल बोला था आपको इंट्रोडक्शन, तो आपने क्लास लेफ्ट हो गया। भीमसेन, भीमसेन, Veem, are you in this session? Are you in this class? Don't worry, I am asking you the introduction, not the presentation. Okay? डरने का कुछ बात नहीं है। Just अगर है तो क्लास पे एक बार रेस्पॉन्स करो, नहीं तो I will remove from the meeting. Veem Sen, are you in this session? Okay. Sorry, I will remove from the meeting after 5 minutes. If you have any question, any problem, you just write down the chat box. I will cooperate with you, but without any kind of response, it's really impossible to manage the session. Okay? अच्छा, दशरथ शाइनी, दशरथ शाइनी, यस सर। हाँ स्टार्ट करो दशरथ। सर मैं कल की क्लास में था नहीं। अच्छा कैमरा ऑन करो, आपको इंट्रोडक्शन दो दशरथ। हेलो सर, हाँ माय नेम इज दशरथ एंड आई एम फ्रॉम नीमका थाना, राजस्थान। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम शेखावाट यूनिवर्सिटी इन 2021. I have always been interested in IT. That's why I have joined eVision
हाँ I got अच्छा to know many दशरथ technologies. दशरथ why you have Sir, not joined yesterday class first class yes, sir. कल क्यों नहीं ज्वाइन किया था आपने कल नेटवर्क इशू आ रहा था, लॉगिन ही नहीं हुआ। ओके ठीक so just follow the session okay from tomorrow you have to give also the presentation at the same of the time of the Linux administration right हम लोग Linux का भी क्लास करेंगे उसके साथ साथ इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी ले रहे हो हम तो इसीलिए you have to give the presentation every day with any topic any previous topic that is your revision part at the same of the time it's a, quality type of preparation for the interview is it clear Dasharath so you can follow your friends definitely you can get some of the knowledge how to give the presentation okay अच्छा दिनेश 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 आर यू इन दिस सेशन दिनेश sir. Yes, sir. स्टार्ट करो देखो सेशन पे है रिस्पॉन्स करो क्विकली ये कोई अच्छा तरीका नहीं है Okay. Okay, sir. हम्म, Sir, presentation, sir. हाँ हाँ Any topic, sir? आप कल क्लास पे ज्वाइन हुआ था हाँ, join आएगा, sir. Later join आएगा. मैं तो बोल दिया था कैसे क्या धोना है हाँ एनी टॉपिक को करी Okay, sir. कैमरा ऑन करो Okay, sir. बोलो Good evening, sir. Thank you. Thank you for giving this opportunity to give in this presentation in a wonderful opportunity in this meeting. My topic is Internet Protocol version V4. The Internet Protocol is a IPv4 and forgot it, sir. क्या हो गया Sir, हाँ forget it, प्रिपरेशन लिया था प्रेजेंटेशन देने के लिए sir. प्रिपरेशन आपने लिया था प्रेजेंटेशन देने Hello? के लिए Yes, sir. Forget it, sir. I will then learn how it you will get the job lastly, Dinesh how you will get the job on the time of the interview sir. what is the expectation you Give me- can get from evision पढ़ाई करो Sir, पढ़ाई करो पढ़ाई करो हर्ष हर्ष Yes, sir. Hello, good evening, sir. My name is Harsh Kumar. I did my graduation from IP University in BCA. Today's topic is of networking. So first of all, I want to uh, tell you about what is networking. Networking is basically the interconnection of devices, people, uh, through which we can communicate information. So what and second thing is what is computer networking computer. It is a connection between computers through which we can communicate or share data with each other throughout the world. So in this networking, I have studied about cables, three types of coax cables, twisted cables, and fiber optical cable. Fiber optical cable is used in nowadays technology, like you can see in day-to-day life, like in 5G. It is it is used because in 5G because the transmission is very fast, and it is and the data loss is minimal in this cable. The second thing is it is used for broadcasting purpose also. In this, I've also learned about uh,
types of switches, connectors, and hubs topologies. Basically, in topology, there are 5 to 6 type of topology: bus topology, star topology, uh, star topology. In bus topology, we have the system is connected in round shape through each other. If one system get affected, the other system also get affected. In star topology, uh, uh, there is center main system which is connected in circular way with each other systems. If suppose if one system get disrupted, so the other connector system will not get affected, but the central system get affected, the whole topology uh, will get destroyed, or you can say damage. So in this other thing I have learned in this network topology, in networking, uh, is uh, what is the use of switches? What is the use of router? Basically, router is a type of system through which we can connect to a system, like Wi-Fi. The router is connected with wire, and it has antenna through which through which we can get access through Wi-Fi to our phones or system or laptops. Uh, uh, the second second thing is switch. Uh, Switch is a type of device, intelligence device. Suppose there are systems is connected. Uh, switch, if one get affected, the switch will not affect through switch. The other system also will not get affected. Uh, in these things, sir, I have not revised yet. So, Okay, Hers, yes, sir. the point is that your information is everything correct. But why you are at the last time you have surrendered, जो sir I have not prepared. सब तो ठीक ठाक ही था. देखो, the point is आपने सही बोलो, गलत बोलो, जो भी बोलो, confidently बोलो. That is the point. Okay, sir. Am I clear? And you have to be more confident. आपने थोड़ा ना nervousness show कर देता हो, जो आपने थोड़ा हाथ ऊपर नीच कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, right? So don't do this. You Okay, have to sir. take it very casually. Okay, sir. जो हो जाएगा हो सकता है, ठीक है? But try to understand, always be confident. That is important. Okay? Going on हो जाएगा. Okay, sir. Thank you, sir. जितेंद्र जादव यादव, yes. जितेंद्र यादव. Jitendra Yadav, are you in the session? Jitendra Yadav, Bhimsen, Kunal Patil. Sir, Yes. I'm visible, sir. Yes. Good evening, sir. Thank you for giving me this golden opportunity to presenting in that meeting. My presentation topic is OSI layer. Sir, basically OSI layer is stand for Open System Interconnection, which defines all the methods and protocols needed to connect one computer to another computer over the network. And it was developed by ISO, which stands for Indian Organization of Standardization. It divides in each divide network architecture into 7 layers. First layer is application layer, sir, which contain protocol like FTP, HTTP to allow network access over the another network. Second layer is presentation layer, sir, which translate, encrypt, and transmitted data. Third layer is session layer, which is responsible for maintaining and terminating session between applications. Fourth layer is transport layer, sir, which is responsible for delivery the message from one process to another process.
Then there is a fifth layer, which is network layer, sir, which manage logical address across multiple network. Sixth layer is data link layer, sir, which which is which is responsible for moving frame from one node to the next. And seventh layer is physical layer, sir, which is used for move data in the form of electromagnetic signals. Okay. Kunal, Yes, sir. presentation is perfect. Why you Yes. are so angry? मैं आपको बोला था presentation देने के लिए इसीलिए. No, sir. No. So be smile. Yes, this smile is Okay, important, sir. right? Yes. Otherwise, Okay, sir. everything is fine. Very good. Okay, thank you, sir. Very formal presentation. This is very nice. Okay, thank you, sir. हाँ. MD Jasim. अच्छा अच्छा जितेंद्र बोला था. ओके ओके जितेंद्र, वेरी सॉरी. ओके ठीक है, यू मे गो नाउ, नो प्रॉब्लम. हाँ हाँ, MD Jasim, कोई बात. Hello, good evening everyone. Thank you sir giving me this golden opportunity to give the presentation in this topic. My presentation topic is operating system. So let's start. What is operating system? अच्छा Operating Jasim. system is a Jasim, yes very sir. sorry for the introduction. First of all, you are not visible. You are opposite side of the light. That's why phase is totally black. Am I clear? So always try to maintain the phase in front of the light because phase is important. आप किसी phase पे बात कर रहे हो. ठीक है, आज कंप्लीट कर लो. कल से Okay sir. जस्ट ये चीज एक बार मेंटेन करेंगे. ठीक है. Yes sir. हाँ, going on. So let's start now. What is operating system? Operating system is a collection of set of programs which manages all the resources of the computer system. It is an intermediator between the user and hardware. Now I want to tell you about advantage and disadvantage of operating system. So let's start. Advantage. Operating system provides a GUI interface. GUI means graphical user interface for the users in the form of menus, icons, and buttons. Second, operating system also allows to sharing the resources with other users. Next, it helps user to understand the function of a computer. Now, I want to tell you about disadvantage of operating system. If any problem affected in operating system, you may lose all the content which have been stored in already. Now I want to tell you about types of operating system. First, single tasking and multitasking operating system. A single tasking system can only run on program at a time, while a multitasking systems allow us more than one programs to be run concurrently. Second, single and multi-user. Single user operating system have no facility to distinguish users but may allow multiple programs to run in tandem. A multi-user operating system extends the basic concept of multitasking with facilities that identity, process, and resources such as disk space belonging into multiple users. So that's all. Thank you, sir. Yes, very good. Jasim, very nice. जस्ट थोड़ा लाइट का पोजीशन चेंज कर लो. सब कुछ ठीक है. Yes, sir. Okay, I will. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, मोहम्मद आसिफ. मोहम्मद आसिफ. Yes, sir. Good evening. हाँ. Thanks for giving me the opportunity to presentation in this meeting. My presentation topic is ITIL. In ITIL, ITIL stands for Information Technology Infrastructure Library. In ITIL, a term is incident.
Incident is any unplanned or sudden interruption to the IT services. And if any incident repeating again and again, then it's called a problem. And another term is RCA. RCA is the root cause analysis. If we are working any ticket, then we need to find root cause analysis of any incident. And another term is workaround in ITIL. Workaround is it is a temporary solution to a technical issue until permanent resolution is in place. And another term is OLA, Organization Level Agreement. It is agreement between organization and staff members between two companies. And another term is severity. Severity is uh, any impact of an issue is known as severity. If any impact on any issue, so we call severity. And another term is priority. So we define to any incident or any ticket, we need to resolve which issue first. This is called a priority. That's it. Okay, very good. Asif, very nice. Thank you, As sir. per the past presentation, it is very good, but one point, the eyes. Always try to be focused to the camera. नीचे नहीं है, हाँ? Okay. Hmm. Thank you. Nikita Power, यस सर start करो. सर एक्चुअली मैं कल क्लास में नहीं थी ठीक है, कैमरा ऑन करो, इंट्रोडक्शन दो. Give your introduction. गुड इवनिंग सर थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू ऑफ ऑल thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Nikita Novyuk Pawar. I am basically Satara, but currently staying in Pune. I did my graduation BCom from Nashik University. My strengths are self-motivated and hardworking. That's all. Okay. So Nikita, I think you have already followed that your friends are giving the presentation. The idea of presentation is clear. Sorry. The idea of presentation is clear, Nikita. Hello. निकिता, Yes, sir. काल से आपको प्रेजेंटेशन देना है कोई प्रीवियस टॉपिक के ऊपर. हाँ, Okay, okay, sir. ठीक है. हाँ, अच्छा, ये पिंटू फ्रॉम फरीदाबाद. Yes, sir. हाँ. Am I visual, sir? Good evening, sir. Yes. Thank you for giving me this opportunity to presented in this meeting. Today my presenting IT topic is boot mode and administrator and user. Boot mode. Basically, there are two types of boot mode. First, legacy mode, and second, UEFI. Legacy mode. It is a old boot. It is no secure and no faster. It support MBR. It's partition size up to 2 TB. And other thing is UEFI is a new boot. It is new and faster boot. It support GPT guide partition table. It may partition size up to more than 2 TB. Sir, actually my actual problem is I am very tense when you ask me any question. क्यों? मैं कोई यहाँ पे बंदूक लेकर खड़ा है क्या आपको No, शूट sir, कर no, दूंगी? sir. This is my problem.
कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज योर पावर, यू हैव टू टेक इट, दिस इज योर पावर, दिस इज योर एबिलिटी, Yes, sir. राइट? किसी के अंदर कुछ कम नहीं है, जिसके अंदर कुछ कम है और दूसरा कुछ चीज थोड़ा ज्यादा है, राइट? Yes, sir. So you have to believe on your God, right? Yes, sir. So what is your current age? My current is 23, sir. 23. So definitely you are now want to take the load of your family, right? Financially, Yes, sir. right? So this is a motivation. You have to think for that. जो हाँ हमारा भी काम करना पड़ेगा, मैं भी बड़ा हो गया अभी, ठीक है? Yes, sir. टेंशन का कुछ बात नहीं है, टेंशन तो होगा, इसलिए ही तो प्रेजेंटेशन सेशन मैंने रखा था, और आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा। आपने कोशिश करो ना, जो भी है Yes, बोलो, कुछ भी बोलो, जो प्रिपेयर किया तो वही बोलो। yes, sir. So, my next is administrator. Administrator has completely and on completely access. He can take any, he can see any user data and all type of control. While user account is a permission and collection of setting which determine that user what he can do and what can he not do. And in difference between administrator and user is, first of user had limited uh, user had limited access, while administrator has unlimited access. Administrator can download and uninstall the any app, while user is not uh, access to install and ओके, ठीक है पिंटू, कितना टाइम प्रैक्टिस किया था बोलो? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रैक्टिस? sir 5 to 10 times, sir. 5 to 10 टाइम्स। Yes, अगर मान लो आपका कुछ डिजीज हो गया, राइट? yes, sir. जस्ट एक एग्जांपल, गॉड मत करो ये, बट जस्ट एन एग्जांपल। तो आपने डॉक्टर के पास गया था, मान लो आपको फीवर हुआ, ठीक है? तो डॉक्टर ने बोला था जो भाई आपने सुबह एंड शाम एक एक कैप्सूल लेंगे, ठीक है? 2 कैप्सूल दिया था, आपने 4 दिन बाद देखा था आपको फीवर नहीं जा रहा है, फिर से डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोल रहा है जो नहीं, ये 2 कैप्सूल से नहीं हो रहा है, आपको और भी एक टॉनिक लेना पड़ेगा, लिक्विड। तो इसका क्या जीस्ट आ रहा है? मतलब आपको 5 टाइम 10 टाइम भी नहीं हो रहा है, 50 टाइम्स करो। Yes, कोई तो टैक्स नहीं देना है आपको गवर्नमेंट को, जो आपने एक्स्ट्रा थोड़ी चीज अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट करना है। नो, यू हैव टू यूटिलाइज योर प्रॉपर टाइमिंग। यार चलो हो जाएगा। okay, sir. एंड बिलीव ऑन यू, डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। Okay, sir. नहीं, पीटर फ्रॉम चेन्नई। Yes, sir. Sir, very Yes. good evening, sir. Sir, I will give my perspective. Sir, I live from I What? joined. Sir, I'm entering my home. Sir. 5 minutes. I will give back my leave. Very sorry, I'm not getting your voice clearly. What? Yeah, sir. I am actually I late from office. I am entering my room actually. Today I joined early by taking a traveling time. I joined, so I am entering. Aja, you are now traveling. Yeah, sir. So why you have taken this session in this time? Actually, sir, if I'm missing something, that is not get lost. So you have to Joined be it. participate in the session. From the next day, are you able to give the presentation, or every day this is the same problem? No, sir. Tomorrow definitely first person. Okay, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, Yeah. रामिया बीएम, रामिया रामिया बीएम, Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करो।
Visible? Good evening, sir. Thank you for giving. My name is Rafia BM. Thank you for giving this opportunity in this meeting. Today I am presenting my topic is router. router नहीं है, router. Router is a physical device connecting a networks. Yes, sir. क्या हो रहा है? Going on. It helping to connecting a different network, different types of network, different type is of network. Router, and then router is hardware device. Each interface router act like a computer and ability to read IP address, and it maintains the network address and information about the computer. Default gateway is networking, but IP address is router. Thank you. Ramya, it's not Yes. the proper presentation. You have already followed your previous friends. You have to be more. You have to take the more preparation. Okay. Okay, sir. Hmm. Thank you, sir. Rushikesh from Nagpur. Yes, sir. Start करो. हाँ, sir. Sir, give me a second, sir. क्या हो रहा है कि स्क्रीन पे? हाँ. So now I am visible. कैमरा थोड़ा नीचे करो. Yes. Good evening, sir. My name is Rishikesh Manoj Sonurkar. First of all, thank you for giving me this opportunity of presenting this topic of presentation. My today's topic for the presentation is the basics of networking. See, whenever we talk about this networking thing, it consists of different terms, which include network, networking, ARPANET, types of networks, as well as topology, OSI model, different things. I'm going to tell you in a brief about everything one by one. So basically, what is network? So basically, whenever there is a connection between the nodes of the people, it actually helps us to share the information, which is basically the network. Now, we know about this term networking. So whenever we talk about networking, it exchanges the people with a common profession. This is basically one of the term of the networking. As I told in the network part, there is one term called node. So node is basically the one of the physical devices in the network's architecture. So basically, this is belongs to node. Then nodes are maybe different things, maybe router, maybe your mobile phone, maybe your PC. Now, in the history, then what is the history behind this network? So before 1960, we actually shares the information with the help of the books, post office, or I can say newspapers. These are the different kinds of ways which we use for sharing the information. But nowadays we are actually in the digital world. Therefore, we
actually share the information with this networking devices. Now, there was the first network called as the ARPANET. So basically, this is the first network ever produced, which is for the US department. It is actually produced with the help of the different universities, as well as with the help of the US military department. It is actually developed for the US military. This ARPANET actually stands for the Advanced Research Project Agency Network, and then it is used for the intel information, or I can say the intel sharing information for the US military. Later, the universities from the Maximo Malibu actually participated in this program, and it made available for the everyone at some standard cost as well as the rest at the or the rest rates. Now, I can say about the network. There is a network architecture. When I say about the network architecture, it includes the two different things. Maybe it is a peer-to-peer, or it may be the server to client. Whenever I say the peer-to-peer, there is no central administration. There is a central administration thing. Also, there is a, when I say the transmission of information in case of the network, then it maybe include the different transmission modes of the data, which I can say that the simplex mode, duplex mode, half duplex mode. If you consider the simplex mode, then best example is TV, because the connection is coming only from the single side. Now I can, if I consider the second one, the half duplex mode. In this case, the communication is actually the bidirectional. The best example is the walkie-talkie. Whereas in, I can say the full duplex mode. Here, the actually two-way communication is possible. The best example is video chatting, just like this Zoom call. This is actually the best example of this network architecture. Now, sir, I just want to tell you about the topology. Then what is, whenever I talk about the topology, basically it is the structural layout of the network. It includes the different terms like the bus topology, star topology, tree topology, hybrid topology, as well as the different, there are the more topologies. And whenever I talk about the topology, which means the computer network structure. So first topology is the bus topology. In this case, the different nodes are connected with each other with the help of the single backbone cable. Then there is a another one, which is basically the ring topology. In this, all the nodes are connected to each other in the form of link, form of the ring, or I can say it is a more flexible, or I can say more advantageable as compared to the bus topology. Then there is a tree topology thing, as well as the hybrid topology. This hybrid topology is actually the combination of different other different topologies. Or I can, sir, the next topology is a mesh topology. In case of the mesh topology, the connection between the different nodes is possible because the data transmission is possible with the help of the different redundant connections. As well as when I say, sir, this is all about the topology. Network topology. Okay, Rishikesh. That's it from my side. Very good. That's it from my side. From the first day, the presentation is very perfect and formal. Very good, Rishikesh. Thank you, sir. Carry on. Usenji Rao. Usenji Rao. Usenji Rao. Sanket. Yes, sir. Usenji. Yes, sir. Going on. I'm visible, sir. Yes. First of all, good evening, sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself and presentation in the meeting. My topic is VPN. VPN is a virtual private network. It is used to connect your corporate network while working from the remote locations. You can establish a secure manner encrypted to the virtual tunnel in the encrypted. In the use of VPN is a many companies are using to the secure purpose and by using talking to the from internet by using the virtual network tunnel and many companies are different type of VPNs are using
and Cisco Connect, and another one is um, another one is Global Protect. Another one is Palo Checkpoint. Like different type of companies, different type of VPNs are using to secure purpose to the internet connectivity and um, secure purpose to the data. That's it, my side, sir. Very good. Acha. So I think the presentation session is clear to all of you how to give the presentation. Very good and well done to all the students. Very nice. So carry on for this kind of process. Every day we can take the presentation. जो जिसका अभी नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ जो आप लोग presentation के लिए तैयारी करो. Him saying you are not responding in the class. So be very careful. I am requesting and politely requesting to you to give the response. If you have any problem, you can write down on the chat box. Otherwise, I am unable to take this class for you. I will remove from the meeting. Okay? अच्छा, पहला टॉपिक है आज का हिस्ट्री ऑफ लिनक्स. Now note down the first topic for today, history of Linux. Is it visible? Yes, sir. Okay, so all of you please note it down, and after that confirm me done, sir. Okay, I am waiting for you. All of you note it down quickly. Anytime I'm asking you to show the notes in front of the camera. So please note down कर लो हाँ.
Done, sir. Yes. All of you quickly note it down and confirm me the answer. I'm waiting for you. Only one student is giving the response. Completed, sir. Done, sir. done, sir. Sir, completed. Okay. देखो हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, हिस्ट्री क्या चीज है? हम लोग जो लिनक्स अभी तक यूज करेंगे, वी आर नाउ यूजिंग द लिनक्स, बट बिफोर द लिनक्स देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्जन, वर्जन नहीं है, द कंसेप्ट, right? These are the concept. Multix is the concept, Unix is the concept, and UNIX, that is also a concept. Multix, आप लोग वो जो एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कंपेयर कर सकते हो। एंड्रॉयड मोबाइल पे क्या होगा, जो पहले एक वर्जन था आपका वो दैट इज, क्या बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली जिंजर बेट, जेली बीन, राइट? देन यू कैन से ओरियो, किटकैट, दिस आर द वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड। तो ये कोई वर्जन नहीं है, एक कंसेप्ट है एक्चुअली। अभी तक लिनक्स इज द लेटेस्ट मॉड्यूल। लिनक्स का पहले था मल्टिक्स, स्टार्टेड इन मिड 1960 एज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमआईटी, बेल लैब्स एंड जनरल इलेक्ट्रिक। तीन कंपनी मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नेम है मल्टिक्स। इट वाज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग मतलब, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग? एनीवन? Real time sharing, sir. Quick response. नो। सर ये नेक्स्ट, एनीवन? IST GMT वाला जो टाइम होता है सर, वो तो नहीं है? इंडियन लोकल टाइम वाला जो होता है।
नो ऋषिकेश, ओके, वेरी गुड ट्राई। अच्छा, नोट डाउन कर लो, टाइम शेयरिंग को हाईलाइट करो पहले, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो या नोट डाउन करो। जो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। multi-user friend. Multi-user and multitasking operating system is time sharing operating system. The question is that what is multitasking? Multiple tasks can be performed at the same of the time. मतलब अगर आपको एंड्रॉइड मोबाइल का ही एग्जांपल लो, जो एट अ सेम ऑफ द टाइम यू कैन यूज फेसबुक एप्लीकेशन, यू कैन मेक अ कॉल, यू कैन यूज अ व्हाट्सएप, यू कैन यूज अ चैट, एनीथिंग। So देखो, multiple application, multiple process can work at the same of the time. This is called the multitasking. मल्टी यूजर कौन है? मान लो ये जो अभी तक जो बहुत सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो हॉटस्टार, देन नेटफ्लिक्स और जो जो है, राइट? सो इट हैज अ सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू पे सम मनी एंड देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन, राइट? सो द पॉइंट इज दैट ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये आपको तो थोड़ा मनी देने के बाद हुआ। If you are sharing your ID password to your friends will be access your accounts, right? तो the एक account multiple user use भी कर सकते हैं। तो multi user and multitasking को एक साथ बोलना है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Next one is that unique। देखो number 2 and 3 pronunciation is same, spelling is different, so be very careful। Number 2 is that the project was developed in 1970 by Ken Thompson and Dennis Ritchie. And number 3, UNIX, written in C programming language. C is the programming language, you know about that. So Java, C++, CSS, right? HTML, Python, Tango, Django, these are the programming language. So Unix actually ये C programming language use करके हुआ था। And 1975 first source license for Unix was sold to University of Illinois। मतलब 1975 से फर्स्ट सोर्स लाइसेंस जो था, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आर्गुमेंट है, एक प्रूफ है, जो उसी दिन पे यूनिक्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। इट यू हैव टू पे समथिंग टू गेट द यूनिक्स। और ये है इसका एग्जांपल, पास्ट सोर्स लाइसेंस मतलब परमिशन, परमिट फॉर यूनिक्स, और सोल्ड टू मतलब वो पेटेंट की तरह, जैसे हो सकता था पेटेंट टेंडर, तो इसकी तरह वहां पे सोल्ड आउट हुआ था टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस आर द बेसिक हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है इंटरव्यू पे, ठीक है? क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? यस और नो, गिव द रिस्पॉन्स। Clear, sir. Clear, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Clear. Now we can go for the Unix operating system flavors. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, Yes, sir.
Done, sir. हाँ Done, sir. Done, sir. हाँ Done, sir. Yes, sir. Done. Done, sir. हाँ Done, sir. yes. Done, sir. All of you done? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes. So देखो, this is the vendor and this is the operating system. So AT&T Bell Labs, it's a मान लो it's a operating system, it's a company, AT&T Bell Labs, American Telephone and Telegraph Company, right? It is introducing a operating system SIS3 and SIS5, SIS3 to SIS5. Okay, and uh, Sun Microsystem or Oracle IBM, Sun Microsystem or Oracle IBM, that is introducing the Solaris operating system. Sun Microsystem और Oracle IBM that is introducing, देखो आप लोगों को पता है जो यहाँ पे विंडोज है और लिनक्स है, बट ये जो छोड़कर बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया पे आपको पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर SCO, that is introduced as operating system ECU Unix, BSD Berkeley Software Distribution introduced as operating system, FreeBSD HP, Hewlett Plackards introduced as operating system HP UX, Apple Mac OS X server. Okay, the point is that AT&T Bell Labs, American Telephone and Telegraph Company, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था SIS3 to SIS5. Type 2 question, SIS3 to SIS5 introduced the operating system AT&T Bell Labs, right? So, तीन तरीका का क्वेश्चन हो सकता है, आपने आंसर दो. AT&T Bell Labs introduced which operating system? SIS3, Yes, SIS5. SIS3 to SIS5. And SIS3 to SIS5 operating system can be introduced by which vendor? AT&T Bell Bell Labs. Labs. AT&T Bell Labs. Third Okay. type of question, AT&T Bell Labs introduced SIS3, SIS5 operating system. It is based on which operating system? Linux. Unix. Unix. So these are the three types of question. Okay, ऐसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है HP, क्योंकि these are famous for the computer laptop peripherals company, right? वो आपको कीबोर्ड माउस लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप ये सब बनाता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, आपको पता है? पता नहीं है, so that is very important. Question number 1, 2, 5, 6 is very, very important. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The now note down कर लो Linux. What is Linux? इसके बाद हम लोग डाउनलोड प्रोसेस पे जाएंगे. नोट डाउन कर लो what is Linux.
Hello, sir. Done. Oh. Done, sir. Yes, sir, completely. Yes, No, just sir. wait for your friends. Done, sir. Yes. Done, sir. Done, sir. Just a second. देखो Linux operating system, right? Linux is a Unix like computer operating system. Operating system and developed by Linus Torvald 1991, right? Why it is showing the Unix like, देखो Unix is the latest one, मतलब last version before the Linux. Unix is the last version before the Linux. Clear? Linux is a Unix like computer operating system. So definitely Linux can take features from Unix, right? Developed by Linus Torvald 1991. Source model can be open source or proprietary. What is open source? Freely distributable to all, free of cost. जिसका कोई subscription charges नहीं है, जिसका कोई मान लो कोई वो जो होता है ना, जो आपको डाउनलोड करने के लिए कोई चार्जेस देना है, एक्टिव करने के लिए कोई पेमेंट करना है, सो इट डजंट हैव दिस काइंड ऑफ एनीथिंग. So it is open source, freely distributable to all, available for mobile devices, desktop servers, mainframe, supercomputers. 35% of the internet server and 99% supercomputer powered by the Linux. देखो, desktop is computer, server is computer, mainframe which computer can manipulate the big data, supercomputer is using for the satellite system. So mobile device के अंदर Linux का है, आपको पता है? No, sir. No. Bluetooth. Mobile device, Huh? sir. Mobile devices, Bluetooth. Mobile, sir. Yes. देखो, all of you please go to the settings option. Yes. Then, sir. Then go to the about phone option. Okay. Okay. Then come to the all specification option. देखो about phone के ऊपर वहाँ पे all specifications है. Yes. ठीक है. Now देखो वहाँ पे बेसबैंड वर्जन के साथ कर्नल वर्जन शो हो रहे हैं, हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Sure. So this kernel is the Linux kernel. टोटल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मार्केट पूरा लिनक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. Okay. Okay? Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir.
वेरी गुड। सर मेरे इसमें अच्छा, दिखाई ही नहीं दे रहे कहाँ पे कौन से ऑप्शन। आपका क्या एप्पल का सेट है क्या? नहीं नहीं सर, यही है एंड्रॉइड आप सॉरी विंडोज। विंडोज है, विंडोज पे थोड़ा सेटिंग्स चेंज है एक्चुअली। विंडोज पे लूमिया सेट क्या है सर ऋषिकेश? सर उतना नहीं पता है। हाँ हाँ, थोड़ा दूसरा देखो, वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, एक काम करो, कोई एक स्क्रीन शेयर करो। कल मैंने बोला था जिसके पास कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, टू प्लीज एनीवन शेयर द स्क्रीन टू डू द प्रैक्टिकल फॉर टुडे। क्विकली क्विकली क्विकली। सर मैं ही कर देता हूँ। हाँ भाई, करो ना भाई, कोई बात। All of you note down the question how to download the Red Hat Enterprise Linux ISO image. Note down the question how to download the Rishikesh. You also note it down on your notebooks and do the practical at the same of the time. Okay. Okay. All of you note it down how to download the Red Hat ISO image. Red Hat ISO image. How to download Red Hat. Sir, how to download the RAD ISO image? हाँ हाँ हाँ। सर लेकिन वो जो अभी आपने बताया वो सर कोई सेटिंग्स में जाके कुछ पैच, सर वो मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा सर मेरे सिस्टम में। तो सेटिंग्स में भी गया था। वहां पे लूमिया पे अगर आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तब मैं बोल सकता। यहाँ पे नहीं है, ये वाला कौन है ऋषिकेश? ये तो आपका कंप्यूटर है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने, आपका मोबाइल के लिए बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड मोबाइल। अच्छा एंड्रॉइड, अच्छा सॉरी सॉरी सर फिर ठीक। हाँ, यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको? विंडोज पे लिनक्स का कर्नेल कैसे आएगा? सेटिंग में हाँ कौन से ऑप्शन पे जाना है सर? सेटिंग्स के बाद अबाउट फोन्स पे हाँ देखो, हाँ ऑल सर। स्पेसिफिकेशन। मोस्ट कॉमन सेटिंग्स these are, but some of the device can make some other different point. वहाँ पे तो पैच दिया ही रहता है वो। ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक, जस्ट डाउनलोड करो ये ऋषिकेश। कोई यस सर। नोट डाउन करो हाउ टू डाउनलोड द रेडेड आईएसओ इमेज। सर वो कर लिया है। हाँ, ओपन द गूगल क्रोम। इसको कैसे स्मॉल करेंगे। न्यू टैब ओपन कर लो, न्यू टैब। ओके, न्यू टैब ओपन करो। हाँ, सर ये कैसे जाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा। न्यू टैब ओपन करो। प्लस प्लस वाले पे जाके न्यू टैब। हाँ ये हाँ अभी आया अभी आया। हाँ यस सर, क्या क्या टाइप करना है सर। हाँ, फुल स्क्रीन करो। अच्छा, टाइप करो रेड हैट। ऑल ऑफ यू नोट डाउन द प्रोसेस जो हम लोग स्क्रीन पे कर रहे हो अभी, नोट डाउन करो। ओपन द गूगल क्रोम एंड टाइप हियर रेड हैट, एंटर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, देखो रेड हैट का www.redhat.com। और यही है सर। क्लिक द सेकंड लिंक। हाँ, ये वाला। ओके। अच्छा, नाउ राइट साइड टॉप देखो, लॉगिन बोलकर एक ऑप्शन है। हाँ क्लिक सर। ऑन टू द लॉगिन। हाँ सर। ठीक है, ये आपका हाँ लॉगिन इंफॉर्मेशन है। आप वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स हियर। So यस सर। first of all, you have to create an account. So click on register an account. यस सर। भरना है सर। हाँ, choose the Red Hat login पे क्लिक करो। ओके।
अच्छा, वहां पे आपका ये टाइप करो, नाम टाइप करो, ठीक है, नाम के साथ कोई नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डालो। हाँ ठीक है सर। नहीं, पूरा ईमेल नहीं है, अगर ये ऋषिकेश पूरा ईमेल डालने का जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ हटाओ। ईमेल आपको बाद में देना पड़ेगा फिर से, कि वहां पे नहीं लेंगे। यहाँ पे हाँ हाँ, वहां पे थोड़ा कुछ हटाओ। 25 @ तक नहीं रखो, ठीक है, @gmail.com देने का जरूरत नहीं। सर इसके ऊपर नाम ही रख देता हूँ फिर सर, हाँ याद रहेगा। कैरेक्टर भी हो। Password 14 character. हाँ, पासवर्ड 14 कैरेक्टर वाला पासवर्ड डालो। 14 कैरेक्टर पासवर्ड, ये ऋषिकेश जरा वहां पे ये करो, विजिबल करो जरा। सर इसको 14 कैरेक्टर वाला कर देता हूँ। हाँ वही। हाँ 14 कैरेक्टर्स एंटर कर देता हूँ हाँ, मैं। 14 कैरेक्टर करो, बट विजिबल करके करो, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ ठीक है, आपने 14 कैरेक्टर कर सकते हो तो करो, नो प्रॉब्लम, करो करो करो। राइट साइड में विजिबल जा रहे। 1 2 3 हो गया सर। हाँ इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दूं सर पूरे? हाँ इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दूं पूरे? हाँ हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालो। डिपार्टमेंट में हाँ डेस्कटॉप डिपार्टमेंट में हाँ IT desktop, help desk. हेलो हाँ बोलो। सर, कहाँ पे सर हेल्प कुछ भी डेस्क कर दिए? चूज करो, कुछ भी चूज करो, हाँ कुछ भी चूज करो, वही बोल रहा हूँ मैंने। हाँ कुछ भी ठीक है, चलो एनालिस्ट कर देते हैं। उसके बाद हाँ क्रिएट माय अकाउंट। हाँ आएगा क्या? मेल आया नहीं सर अभी तक, 1 मिनट। हाँ, देखो आपने ईमेल पे आपने एक लिंक वहाँ पे एक्चुअली क्रिएट किया था, उसको जस्ट वेरीफाई कर लो। हाँ सर। हाँ कंफर्म वैलिडिटी फिनिश्ड। हाँ हो गया है सर, हाँ वेरिफिकेशन कंप्लीट। सर यहाँ से कैसे, अभी इसको रिफ्रेश करूँ क्या पेज को? यस। यस, लॉगिन।
Okay. डन। अच्छा, नाउ अभी क्या करना है? देखो लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट्स है। हाँ, यस सर। ओके सर, प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दिया। हाँ, क्लिक ऑन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। यहाँ पे क्लिक करो। ये ओपन हो गया सर। हाँ, ठीक है। नाउ देखो, this is the our official website. So click on to the products, left side top. Right? Then click on Red Hat Enterprise Linux. सर बार बार वही आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करो, वही तो आ रहा है। स्क्रॉल डाउन, हाँ ये देखो ट्राई इट ऑप्शन है, तो क्लिक ऑन टू द ट्राई इट। ऊपर 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 जाओ, रेड कलर जो ट्राई इट है। हाँ, यस सर। हाँ, देखो नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रायल ऑप्शन। योर ट्रायल। यस सर। ओके, नाउ कंपनी नेम टाइप करो, एबीसीडी कुछ भी टाइप कर दो। डिवीजन ही डाल देता हूँ सर। हाँ, इसको नहीं डालते, दूसरे को डाल देते। सर कंट्री इंडिया। इंडिया, ओके। नागपुर कर देते हैं। ठीक है। सिटी डालो, जस्ट एड्रेस कुछ भी फिलअप करो। एड्रेस लाइन 1 2 फिलअप करना है। ऋषिकेश एबीसीडी कुछ भी डालो बट फिलअप करो। यस सर। हाँ, इसको महाराष्ट्र कर देते हैं। हो गया सर। सबमिट कर दूं सर? हाँ, सबमिट कर दूं? हाँ सबमिट कर दो। हाँ, हो रहा ठीक है। है, सबमिट पे क्लिक करो। सिटी पोस्टल कोड डालना पड़ेगा, सिटी पोस्टल कोड डालना है। दिस आर द मैंडेटरी पोस्टल कोड, सिटी डालो। हाँ, आ गया। हम्म, अच्छा देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया। क्लिक करके देखो, अप्रोक्सीमेट 10 GB। इज इट क्लियर? 9.8 GB है एक आईएसओ का साइज। कैन यू इमेजिन विंडोज जो वो सर्वर बोलो, आपका ये बोलो क्या है वो, क्लाइंट बोलो, विंडोज एक्सपी है कुछ भी है, वो लगभग 5 to 6 GB, और ये एक फाइल का ही डबल। दैट इज द लिनक्स। ये आज अभी डाउनलोड हो रहा है। कल इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने दिखा देंगे, जो इसको कैसे इंस्टॉल करना है। Am I clear to all of you? Yes, sir. जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, दोस्त who have the laptop computer, so please try to download the Red Hat ISO.
सर सर अगर ये लिंक हम डायरेक्टली ऋषिकेश से ले लें तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड होगा नहीं होगा सर? हाँ हाँ बोलो। अगर ये लिंक हम डायरेक्टली ऋषिकेश से ले लेते हैं चैट बॉक्स में, तो इस लिंक हाँ पे जा करके हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कर सकते हो। और ऋषिकेश डाल देना चैट बॉक्स में लिंक ये वाला। नो देखो, ये आसिफ, हम्म। लिंक पे ऊपर बिलीव मत करो, क्योंकि ठीक है। लिंक कब काम करेंगे कब नहीं करेंगे, यू डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, ओके राइट? सर। ओके। तो वॉट एवर यू हैव लर्न, लर्न फ्रॉम द रूट। मतलब इसके अल्टीमेट और कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास नॉलेज है कैसे जी जी। फॉर्मल वे पे इसको डाउनलोड करना है, then हम्म। you can download it very properly, राइट सर राइट। right? And do not believe the any kind of links। कोई ट्रेनर, कोई आपको टीचर आपको लिंक शेयर कर देता है, 2 दिन बाद अगर मान लो लिंक काम नहीं कर रहे, दिन वो दिन कहाँ जाने हो आपको? जी तो जी। जो भी सीख रहे हो यहाँ पे ना रूट से सीखो, अल्टीमेट वे पे सीखो, इसके ऊपर और कुछ नहीं होता है। दिस इज द लास्ट। ओके ठीक है? सर। यस। हाँ ठीक है। इसलिए मैंने इतना कुछ शेयर किया था, नोट डाउन करने के लिए बोला था। अगर कुछ भूल जाएगा कोई स्टेप, कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने ये कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, सो ऑल ऑफ यू प्लीज नोट, डाउनलोड कर लो आज के अंदर, ठीक है? कल उसको अंदर उसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं दिखाने देंगे हम लोगों का, ठीक है? ठीक है अच्छा सर। नाउ सर एक क्वेश्चन था बोलो। सर। एक्चुअली ना वर्चुअलाइजेशन के क्लास के समय जब एकदम लास्ट क्लास था। ओनली एकदम डाउनलोड किया था, राइट? हाँ सर सर तब वो रेल, ये जो है ना रेल, यही डाउनलोड किया था सर। हाँ, सर तो वो और व्हाट्सएप ये किया था बोलो, क्या सर? व्हाट्सएप किया था। सर वर्जन वर्जन नहीं पता मुझे, 1 मिनट से मैं देख लेता हूँ। मेरे पास है वो फाइल अभी भी। व्हाट्सएप एक बार चेक करके बताओ, अगर 8 9 है तो ठीक है। हाँ ठीक है? यस सर। हाँ सर, वर्जन है हमारा रेल 8.1 इंटू 8। हाँ सर, रेल 8.1 इंटू 86 64 DVD। क्या क्या, और एक बार बोलो। सर ये फाइल का नाम है हमारे रेल 8.1। हाँ 8.1 पे हो जाएगा, नो कोई बात नहीं है, ठीक है? बट लेटेस्ट वर्जन अभी 9.3 चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। Sir, ओके, हाँ बोलो। sir, I have Oracle VirtualBox Manager. Is this? हाँ, ओरेकल But वर्चुअल वर्क्स को मत करो, थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बहुत स्लो कर देते हैं आपको सिस्टम को, और आपको ये इशू, मतलब ये जो आपका क्या होता है but पूरा प्रोसेस को। I forgot account details. Password I forgot it. किसका पासवर्ड? Uh, login password sir. कहाँ कहाँ लॉग इन करना चाहते हो बोलो। Oracle VirtualBox. That's one sir. Login. ओरेकल वर्चुअल वर्क्स नहीं चाहिए हमारा ना, VMware चाहिए। तो Sir? VMware डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, हाँ? हाँ इंस्टॉल करेगा सर। बस ठीक है। और कल ये जो आईएसओ आज डाउनलोड किया था, ये आईएसओ का कल इंस्टॉलेशन होगा, हाउ टू इंस्टॉल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। क्लियर? Yes. ओके सर। हम्म। Yes. यस सर क्लियर। अच्छा, now I will show you the certification part of Linux. Is it visible? Yes, sir. Just note it यस down. सर। The certification part of Linux.
Done, sir. Done? Yes. Yes, sir, done. देखो यहाँ पे दो सर्टिफिकेशन पाथ है। सर्टिफिकेशन पाथ मतलब ग्लोबल सर्टिफिकेशन। इट्स अ टफ एग्जाम। Each and every one just try to get the point. After 2 years of experience from IT industry, from the aviation, whatever you are now getting the job from any company, 2 साल बाद आपको कोई स्ट्रैटेजी, कोई ट्रैक कोई चूज करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, बोलो कुछ भी है। You can go for CCNA, you can go for MCSA मतलब Windows Server, you can go for Red Hat Enterprise Linux, RHCSA, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी पे जा सकते हो, बट जहां पे जाओ ग्लोबलाइजेशन करके जाओ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक अलग इंपॉर्टेंस है, एक अलग प्राइस है। प्राइस मतलब इट्स योर रेपुटेशन। ओके, इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir, sir. clear. Yes. So on that time you have to take this examination, right? Just Linux, it's a topmost point to gives you the salary। मतलब अगर आपने ये नंबर 4 पास आउट हो जाएगा ना, तो आपको सैलरी पर एनम वो लगभग 13 to 19 lakhs पर एनम हो जाएगा एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir, clear. देखो ये जो हर एक मतलब जो देखो रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दिस आर द पेपर कोड। पेपर कोड मतलब एक एग्जामिनेशन का ना पेपर कोड होता है। आपने जब बचपन में वो हिस्ट्री जियोग्राफी एग्जाम दिया था, देखो हिस्ट्री का HIS, जियोग्राफी का GEO था, मैथ का मैथ, मैथमेटिक्स का मैथ रहेगा। सो इट्स अ पेपर कोड। तो ये पेपर कोड है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 का पेपर कोड नंबर क्या है, नंबर 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, राइट? सो दिस इज द पॉइंट। Yes. Each examination, the registration fees averagely 30,000, Yes, sir. and if you are fail, मतलब अगर आपने पहला अटेम्प्ट में फेल हो गया, फिर से आपको 30,000 देकर ही एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर दे। We will provide you, मतलब from eviction, and I will provide you these 2 training, मतलब system administrator and system administrator 2, right? The globalization training I will provide you in the next 40 days, and after 2 years you can also complete the globalization exam, ठीक है? और अगर आपने ये पास कर जाएगा तो मैं बोला था इसका सैलरी आपको ऐसा होता है अगर आपने लिनक्स का कोई ट्रैक चूज कर रहे हो, ठीक है? बोलो किसी का कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है? टुमारो वी कैन गो फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी। पहले 2-3 दिन का ना बहुत सारा थ्योरी है, और इसी थ्योरी के ऊपर ही आपको इंटरव्यू पे क्वेश्चन हो सकता है। प्रैक्टिकल हर दिन छोटा छोटा है, पहले 2-3 दिन, उसके बाद पूरा चीज प्रैक्टिकल के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है? बोलो किसी का कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने नहीं किया सर अभी हाँ, कोर्स के समय अंतराल में नहीं क्या, मैंने बहुत सर थोड़ा बहुत सर्च किया था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और वो क्लाउड बेस्ड कौन सा होगा सर, मुझे करियर के लिए अपने मतलब क्लाउड एक बार एडमिनिस्ट्रेटर। बताओ। सर तो एक क्वेश्चन वो ये है कि सर क्लाउड इंजीनियरिंग अच्छी है या फिर लाइनेक्स में करियर ज्यादा अच्छा है? अच्छा, देखो द पॉइंट इज दैट वी आर नाउ इन द हायर सेकेंडरी पोजीशन। आपको हायर सेकेंडरी पता है? आप लोग ऑलरेडी पास किया था HS, राइट? Yes, sir. On the हाँ time of the higher secondary, you have studied a lots of subject, multiple subject, history, geography, math, English, science, commerce, everything.
But after the higher secondary, you can choose the path of specialization. You can go for the other subject, you can go for the that is MBBS, FRCS, any types of engineering field. So एक स्पेशलाइजेशन हो गया. तो आप लोगों का भी सेम अभी तक एज अ सिस्टम इंजीनियर, एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट पे आपको ज्वाइन कर दे. 1-2 साल बाद आपने कोई एक स्पेशलाइजेशन कर सकते. यू कैन गो फॉर द क्लाउड, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द डेवऑप्स, यू कैन गो फॉर द सीसॉप्स. बट जो क्लाउड बोलो, डेवऑप्स बोलो, सीसॉप्स बोलो, उसका जो बेस बैंड है ना वो लिनक्स है. अगर आपको कहाँ पे जाना है, वो आपको लिनक्स चाहिए और एक छोटा सा लैंग्वेज स्किल चाहिए. इट शुड बी पाइथन, इट शुड बी जेनकिन, व्हाटएवर. इज इट क्लियर? आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर. Yes. Yes, sir. Is it clear, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir, clear. ओके, तो ठीक है, आज इतना ही है. किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो. ठीक है, कल हमने नेक्स्ट पार्ट, मतलब आज के अंदर सब लोग डाउनलोड करके रखो. कल कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा जो सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. बट आज के अंदर डाउनलोड करके रखो. ठीक है. Yes, sir. यस, चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. गुड बाय एंड गुड नाइट. ओके. Thank you, sir. Good night, Good sir. night. यस.